रेलों को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक रासायनिक वेल्डिंग प्रक्रिया है। इसमें थर्मिट नामक एक मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे एक उच्च तापमान प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया से बनी ऊष्मा से धातुओं के बीच सम्मिलन होता है। थर्मिट वेल्डिंग की प्रक्रिया। थर्मिट मिश्रण को 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। थर्मिट मिश्रण में मौजूद आयरन ऑक्साइड और एल्यूमीनियम पाउडर की प्रतिक्रिया से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा होता है। इस प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम ऑक्साइड स्लैग बनता है और शुद्ध लोहा बनता है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड स्लैग पिघली हुई धातु के पूल के ऊपर तैरता है। शुद्ध लोहा घनत्व में अंतर के कारण नीचे बैठ जाता है। इस प्रतिक्रिया से बनी ऊष्मा से धातुओं के बीच सम्मिलन होता है। थर्मिट वेल्डिंग के लिए कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं करना चाहिए जिसे इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया हो। Hot in the evening.